Perfect. So, good evening, everyone, and we are in our sixth lecture of the UI/UX design fundamental. So today we'll be kickstarting with wireframes, right? So before that, let's do this. Let's go through the assignments that every one of you all have completed. So we'll start with Nikit, followed by Honey, then Lakshmi, and then we have yeah, that's it. That's three of you. So you guys can start sharing one by one, starting with Nikit. Okay. Can you see my screen? It's loading. Yes, now we can. Okay. So personas and all are fine. Yeah, you can show the competitor. So this I changed. Uh, This is better. Okay, yeah. navigation, scroll, content, graphics. Okay, that's nice. Just add the logos when you have them, and just everything goes good. Logos above every platform. Yes. Okay. Yeah. Okay. And then now show the use cases and the yes. So this is first I have just made what you explained. Okay. Yeah, this is fine. Searches for package Okay. things. So user wants to check his bookings. So uh, he will go to landing page, then log in, then he will go to my account, then bookings, and then booking details. So instead of landing page, it should say home page. Okay. Because landing pages are specific to some offer or a dedicated feature, right? So we'll Okay. call it a home page. Okay. Yeah. Then if user wants to change or cancel his bookings, then there will be home page, then login, then support, then he can call or chat or email. So before this also, there would be an additional step that if you log in, then you first go to your bookings, and under a particular booking, either there will be an option to cancel or there will be an option for support. Yeah. So you But first have to go to a particular booking. but if we go like if we go to a particular booking, there will be like details about that particular booking. But if we want to cancel or change, then we need to just go to contact or support. Okay. So say for example, you call them. Okay. So Yeah. the first thing we will ask is what is your booking ID? What is your booking number? Which Yeah. booking you would like to cancel or change, correct? Yeah. Yeah. So for Okay. that, it is always recommended that you go to a particular booking and then Okay. you ask for support or chat. You know? But I was looking in this way, like the flow in which we go. If we go to login and then we go to bookings, then should we see it in a way that how we will navigate the website? If we are in booking detail page, then if we click on support, then it will go to support page, right? That's correct. Then like if we call or chat, then again we have to go to booking detail page. No, so you will always be on the booking page only. So if you go to say make my trip or booking.com, correct? Yeah. So you always land on a page, on a booking detail page where you have all the details.
You have the guest detail or the passenger details. You have the transaction details, correct? Some terms and condition, and then there is one button which says Yeah. either cancel this booking or change this booking, or it has an option of support, correct? Okay. So what Okay. we can do is the moment you click on support, Yeah. you only get a pop-up which has these options. Whether you can reach out to us on email, you can start your chat, or you can call on this number, or probably ask for a call back. You know? Oh, okay. Yeah. Yeah, got it. Then user lands on the flight listing page by clicking on book flight on third party website. So sometimes what happens is when we are on kayak or something and we click on book now uh, to book a flight, then it actually takes us to the main website. Let's say if I'm clicking to book a flight with Delta, then it will take me to the website of Delta where all the listings are there. So uh, it will be like a landing page, then flight listing, then flight details and booking details, payment and success. This is perfect. This is fine. Yeah. And this is the architecture similar to what you created. Okay. And this is the other one Post after login. login. Okay. Cool. Okay. Yes. Yeah, that's it. All right. So, honey, you can now share your screen. So this is good, Niket. Huh. This is good. So as the next assignment, what you can do is you can create the information architecture of an Yeah. online shopping app, mobile app, Online shopping mobile app. mobile app. Yes. Okay. Yeah. And also try to add the details of each pages. Remember, there was one more information architecture, the detailed one, Yes, where you yes. write the sections of the pages. Correct? Section of all the pages. Yes. 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 So try to do that also as an assignment. Okay, okay. That will be like a separate assignment, right? For Yes. shopping, uh, online Mobile. shopping architecture. Yeah. Yes. Correct. Okay, okay. This will be a separate portfolio thing. Correct. Correct. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Thanks. So, honey, your assignment is Uh, okay. Yeah. So, use cases you can go through. I have seen a couple of them. Vinny, you need to stop sharing this screen. Yeah. Honey, yeah, yeah. please reshare again. Okay. So, we shared the link to check training. Okay, this is fine. Fix and so instead of room details, it would be a hotel detail page. Okay. Yeah. Yeah. Confirmation. So confirmation will be later. After the payment, you will get the confirmation. No? Mm-hmm. So guest details confirmation, then payment confirmation. That is called as a review page. So Okay, yeah. that is review, yeah, not confirmation. Yeah. Yeah, sir. That you are looking for chat, okay, details, payment, confirmation, chat.
No? Okay, this is good. This is a good thought. Next. Again. So this is missing a lot of things, right? There is no Uh, podcast, there is no blog or anything of that sort. yeah. And also the look and feel of this is not appropriate. So if you see the link that I have shared and what you have created, it's a lot different, right? Hmm. So please change this particular thing completely. And next, Yeah. This was the online shopping. where's the yeah, but where is the post login information architecture? No, that I did. Okay, so please work on that as well. Yeah. And please again improvise the look and feel of these. Search detail buy now, continue payment, this order confirmation, card, card detail, address, summary. Hmm. So you're also after card, you will not get product details. You will see the review page. Then you will add. So there would be no review page after cart. So after cart, it would be select address, select payment mode. Then you see the review page, and then the final, confirmation of the Mm-hmm. payment. Yeah? So that needs to be worked on. Add to cart Yes, section. the cart journey. Oh, yeah. Yeah. I'll change it. Okay, next. That's it. No, yeah. Okay. So Vinit. सो एक्चुअली जब ऑडियो Yeah. स्टार्ट होता है ना यहाँ से तो मुझे वॉइस इको सुनाई आती है. Okay. किसी और को भी एको आ रहा है या इट इज ओनली एट हर एंड? निकेत, विनीत, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? Yeah. No echo. So I think ये कुछ इशू है. विनीत अपना screen share कर लीजिए. हेलो. हाँ विनीत अपना सॉरी screen सर. share कर लीजिए. सॉरी सर, मैं कंफ्यूज था कि क्या करना है. ये ब्लॉग्स बनाना है, यूजर जर्नी बनानी है, या उस पर से वेबसाइट बनानी है. नहीं तो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था तो मैंने आपको हाँ उसका रिप्लाई दिया था दैट आपको इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाना है. हाँ, वो मैं कंफ्यूज था. ऐसे ब्लॉग बनाना है, मतलब ब्लॉग्स बनाना है, यूजर जर्नी के ब्लॉग ही सिर्फ बनाना है जो आपने लेक्चर में बताया था, वही काम हाँ करना वही है. बनाना है. वेबसाइट बनाना है, उस पर से वेबसाइट बनाना है. तो मैं इन दोनों के बीच कंफ्यूज था कि क्या करना है. नहीं बट मैंने वेबसाइट बनाना तो अब तक सिखाया ही नहीं है तो आप कैसे बनाओगे? अभी ये हाँ, हमारा असाइनमेंट है, आर्किटेक्चर ही था. मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई किया था. लेक्चर में आपने बोला था कि ये एप्लीकेशन नहीं है, वेब 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 है, मीन्स मतलब वेबसाइट बनानी है इस पर से. नहीं तो असाइनमेंट जो था वो वेबसाइट का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाना था मतलब ना हाँ, कि वेबसाइट वेबसाइट. बनानी थी. ओके, मतलब हाँ वेबसाइट ही बनानी है ना हमें. अगले तो अगला जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो वेबसाइट बनाने. और वो तो मैंने अब तक सिखाया ही नहीं है कि कैसे वेबसाइट बनानी है. अभी तो हम उसके कोर पार्ट पे ही है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे. जो ब्लॉग्स अभी ये लोग ने शेयर किए ना निकेत और हनी ने, हाँ वैसे हाँ, आपको जर्नी बना. अच्छा वैसे ही बनाना था. हाँ तो मैंने इसलिए आपको तो वो मुझे रेफरेंस भी आइडिया दिया, नहीं था. अटेंड करिए.
मेरा एक कंफ्यूज सर क्वेश्चन है, यूजर जर्नी है, यूजर जर्नी मैप होता है, वही इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता है या कुछ अलग होता है? सो यूजर जर्नी जो है वो छोटी छोटी जर्नीज होती है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है ना कि कोई अपनी हाँ टिकट कैंसिल करके आया है, तो वो पूरी वेबसाइट पे नहीं जाता है, वो होम पेज पे जाता है, माय लॉगिन करता है, माय बुकिंग पे जाता है और कैंसिल करता है। तो हाँ, वो मतलब यूजर वो, जर्नी। ओके, और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में जितने भी पेजेस हैं हम सब वहां पर लिस्ट डाउन करते हैं। मतलब वो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में जो जितने भी पेजेस हो गए, मतलब ऐप के हो गए या वेबसाइट के, वो सब इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो फिर डिटेल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में क्या आएगा, तो उससे भी डिटेल क्या? उससे भी डिटेल ये होगा कि मान लो अभी हमने इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में होम लिखा हुआ है, तो होम पेज पे कौन से सेक्शन आएंगे, तो सर्च का एक सेक्शन आएगा, हम्म। ऑफर का एक सेक्शन आएगा, पॉपुलर डेस्टिनेशन का एक सेक्शन आएगा, तो उसमें हम सेक्शंस का नाम भी लिखते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो आप ये भी कंप्लीट करिएगा और इसके साथ ही आप एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का भी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का। ओके, शो ऑनलाइन शॉपिंग और होटल्स का। ओके। हाँ, ट्रैवल का नहीं, ट्रैवल का। ओके सर। ठीक है। सो अभी हम विल स्टार्ट विद द वायरफ्रेम फेज। ठीक है। So before we start with the wireframe, there are few terminologies that we first have to take care. Okay. So let me share my screen, and then it would be easier for us to understand. So my screen is visible, right? ओके, राइट। Screen दिख रही है, Yeah. correct? Yes. Okay. So अभी मैं जो screen use कर रहा हूँ, उसका एक resolution होता है, correct? There is a resolution to every screen, correct? Rest everyone is requested to be on mute. Sir, responsiveness. No, no. What I am asking is, everyone knows. Vinit, can you please mute your mic? Thank you so much. Yeah. So if you see this, right? So there is a resolution to this, correct? So if you see, there is a resolution to my monitor, which is 1920 by 1080, correct? So 1920 pixel is the width and 1080 is the height, which goes from end to end, right? Diagonally end to end. I mean height, width, everything end to end. It does not leave any space. इतना तक ठीक है? सबको समझ में आया? हाँ क्लियर। सर। ओके। अभी जब हम वायरफ्रेम बनाते हैं या डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, सो हम उसको व्यू किस में करेंगे? वेबसाइट को ब्राउजर में, करेक्ट? हाँ सर। सो जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट। ठीक है, व्यू पोर्ट। अब नाउ व्हाट इज व्यू पोर्ट? द एरिया इन अ ब्राउजर दैट इज विजिबल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ व्यू पोर्ट। अब ये हमारा ब्राउजर है, करेक्ट? सो जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो क्या वो ऊपर से स्टार्ट होती है? Does the website start from the very top of the screen? No, right? नो। It starts from here and it ends here. It does not go up till the end of the screen. Correct? So the visible area in the browser is called as the viewport. Okay? So say for example, I am taking a screenshot. Okay? So let's see
I'm taking a screenshot now. Okay, so now this is the snipping tool. If I drag from here up till here, this is my screen resolution end to end, correct? But when we design a website, a wireframe, or anything of that sort, correct? What we need to design it for is for the viewport, which is this area, right? This area. So now let's see the difference between a resolution and a viewport. Okay. So if you observe, the resolution was, tell me what was the resolution? 19200 by 120 correct. Hmm. But if you see that the viewport is always smaller than the resolution. The viewport is always smaller than the resolution, correct? Why so? Because a browser takes up the space of the title bar, the address bar, the bookmarks bar, correct? And the system takes the place of the task manager at the bottom, taskbar at the bottom, correct? So overall, the height of this, if you see, it is 925, right? So whenever we start designing the wireframe, the first thing that you need to do is you need to set up a ruler which is at the height of your viewport. So instead of 925, we always take a safer this thing of 900 whenever we are designing in 1920. Okay? इतना clear है सबको? Is it clear? What is viewport? Any doubts? No, sir. Niket, Vineet, any doubt? सर कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन होता है व्यू पोर्ट को करने के लिए या नहीं हर स्पेसिफिक नहीं साइज में होता है मतलब कोई बट साइज में उसका जो हाँ हाँ ठीक है मैं उसका आंसर देता हूँ जैसे हम अभी 1920 का रेजोल्यूशन है करेक्ट हाँ करेक्ट सो आप अप्रोक्सीमेटली देखिए अप्रोक्सीमेटली आप ना 200 पिक्सल तक आप हमेशा माइनस कर देते हैं ठीक है सो अभी मान लो हम दूसरा एक रेजोल्यूशन लेते हैं डेस्कटॉप का ही विच इज 1440 ये वाला ठीक है सो 1024 तो मैक का है लेकिन जो आइडल रेजोल्यूशन है फॉर अ डेस्कटॉप इट इज 1440 बाय 900 ओके बाय 900 है लेकिन इसका जो व्यू पोर्ट है आप उसको -200 कर सकते हैं तो कितना होगा आपका व्यू पोर्ट कितना होगा 700 सॉरी 700 700 राइट so डिवाइसेस के जो रिजोल्यूशंस दिए हुए हैं वो उसमें भी हाइट कम किया ना हाँ और सो फिर आइडल जो विंडोज का जो ये होता है ना रेजोल्यूशन ठीक है दैट इज 1440 बाय 900 मैक में वो थोड़ा ज्यादा है विच इज 1024 ठीक है सो हम क्या करते हैं जो मास पब्लिक यूज करती है ना हम उसके हिसाब से इसको लेते हैं व्यू पोर्ट को ठीक है इसलिए हमने जो आर्टबोर्ड की साइज है वो 900 है लेकिन हम व्यू पोर्ट 700 ले रहे हैं आप इसको 150 से 200 के गैप में रख सकते हो वी कैन आल्सो टेक इट एज 750 दैट इज फाइन बट नॉट मोर देन दैट ठीक है so एंड
Yeah, tell me. इसमें ऐसा हो सकता है कि हमें दोनों के लिए मतलब मैक के लिए और विंडोज के लिए दोनों के लिए डिजाइन बनाना हो। नहीं नहीं, आप छोटे के लिए बनाओ, बड़े में दिखेगा ही ज्यादा हमेशा, so that is completely fine. If you accommodate for a smaller resolution, right, Okay. height wise, it is anyway going to accommodate the higher one. But if you Okay. design for the higher one, it is not going to accommodate in the one which is in the less height, correct? So that's why Okay. you always design for a smaller height first. Clear? Okay. Yeah. Okay. Yeah. You can take that viewport minus 150 to 200 pixels from the Just for the ideal. height. Yes. Okay. Just for the first fold, by the way, just for the first fold. So now what would be the impact of this? Let's see. Okay. So say, okay, let's open up our website. So I am making this as a full screen just for the sake of it. Okay. Yeah, it's full screen right now. Okay, so I'll take a screenshot now of the entire this thing. Okay, and let's paste it in our artboard. So if you see, the entire artboard is covered now because we have taken the screenshot of 1920 by 1080. Okay, this is fine. Yeah. Yeah, अभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको व्यू करते हैं. Let's view it. We'll view it to fit to screen actual size. ठीक है, actual size. तो यहाँ पर क्या हुआ, स्क्रॉल आ रहा है ना? लेकिन जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, when I took the screenshot, it was not on scroll. So what happened? The height is reduced. Correct? So same thing will happen when you design a website in full height. So that's why what we usually do is we always follow the viewport. सर हेलो सर Just मतलब कि ये पोर्टफोलियो टाइप हो गया वेबसाइट पोर्टफोलियो इमेज just a मान लो second. We need just a second, please. Just a second. I'll come to you. Just a minute. So now if you see this particular artboard, the third one, right? Then you won't find the scroll. Yes. So if you see this, right? Correct? So you see the entire thing in, so yes. So you see the entire thing in the first fold itself, right? So while designing, always mark this first fold, okay, and then design your first screen. Else what will happen is you will end up scrolling for the first fold also. So now if you see, again coming to this example, the first fold is this. What is the first fold? The first section that you see on a website is called as the first fold. ठीक है, तो जैसे अगर हम ये एप्पल का वेबसाइट देखें, तो ये जो व्हाइट बैनर है, दैट इज द फर्स्ट फोल्ड ऑफ द वेबसाइट, ये वाला पार्ट. ठीक है, लेट्स सी अनदर वेबसाइट, से page.i. इट्स अ डिफरेंट अप्रोच. सो ये दिख रहा है, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा अधूरा डिजाइन छोड़ दिया. they have left a small part of the design, so that makes the user understand that this is scrollable. Correct? So if you see, it is fitting properly in first fold, this entire section.
Then when you scroll down is when you see the rest of the website. But first fold needs to be impactful and it should fit in a particular area. Okay? Yeah, Vineet, you are saying something. ये व्यू पोर्ट है, मान लीजिए हाइट 1080 की है हाँ, और कंटेंट बनाते बनाते हम हाइट जो है वो बढ़ाते जाते हैं, विथ उसकी जो है 90-20 रखते हैं और हाइट हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो हाँ, एक टाइम जब वो आएगा कि जब हम उस जेपीजी को, मतलब इमेज को फोन में जूम करेंगे तो लाइक वेबसाइट की तरह दिखेगा। तो क्वेश्चन क्या है? मतलब वो व्यू पोर्ट है उसी की तरह दिखेगा ना, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग का। नहीं नहीं, सो आप वेबसाइट जो है जो डेस्कटॉप के लिए बनाई है वो आप मोबाइल में नहीं देखोगे, पहली बात। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिव हम डिजाइन बनाते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं इट इज ओनली फॉर द डेस्कटॉप। ओके। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड सबको क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या हो जाएगा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, इफ इट इज नॉट फॉलोड, ठीक है, सो मान लो अभी ये हमारा ये है, हमने एक हेडर ले लिया, ठीक है, हमने एक टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई ग्राफिक डाल दिया, ओके, फिर हमने क्या किया, हमने थोड़ा सब हेडिंग भी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, सब हेडिंग भी आ गया। और फिर हम क्या करते हैं, ग्राफिक को फॉर सम रीजन ऐसे बड़ा कर देते हैं, बिकॉज वी फील कि नहीं आर्टबोर्ड का जो साइज है 1920 by 1080 उतना ही कोई भी यूजर देखेगा, और हम फिर यहाँ पर एक बटन दे देते हैं। ठीक है, ऐसे कॉल टू एक्शन। सो अब हमने डिजाइन बनाई बिना व्यू पोर्ट को ध्यान में रखे, वी आर डिजाइनिंग इट विदाउट keeping the viewport in mind. So what happens? What happens? So let's see this in browser. It will be more appropriate for us to understand. Right? So say for example, I'm opening this in a browser. Yes. So what happens here? I see the header, I see the headlines, I see the subtext, I also see the image, but I don't see the call to action unless I scroll. Right? या So that is why you always have to keep in mind that what is my first fold height, what is my viewport height, correct? So then accordingly you have to make the iterations, correct? So now if I see, yes, it is visible in my first fold, या yes. So always the first thing that you have to take care is the viewport height. It is very important. And then one more important thing to make sure is that you always set that viewport height here. Okay, the same viewport type, not the document height, the viewport height. So here we have taken this viewport as 900. So always take this as the same viewport. So now when you see this, you will always see the website how you will see it in a browser, correct? So now if you see here also, you see the viewport height, correct? So this is exactly how a user will see when they open the website on the browser. नीचे थोड़ा ज्यादा दिखेगा ना, that is fine, but कुछ कट नहीं आना चाहिए हमारे व्यू पोर्ट से।
All done? All clear for viewport? All three of So you? Harsh, in the third slide or in the I think in the first slide you again oh yeah, in the third slide you moved that scale upwards, like beyond viewport as well for the first one. It's This coming on one? the image. Yeah. Because that is a screenshot I wanted to showcase us to the difference in the viewport and the resolution only for that. So this is fine. So as I mentioned, that if it is, if you are seeing a little bit of data of the next section in the first fold, that is completely fine. Okay. Yeah. But the But first fold section should not move down in the yeah. second section. Yeah. Okay. Okay. How to take ruler for, okay. So So where was that option in which you changed for preview? yeah, I'll take that also. So honey, for your question, this is the ruler. Okay. So you have to click and drag from here and set the ruler here to 900. Clear, honey? So like at what distance we have to set that? As I mentioned that आपका जो document का resolution है originally 1920 by 1080 है, correct? तो उसमें से आप 150 से 200 पिक्सल तक कट कर सकते हैं. So minus 150 से 250. 150 से 200 पिक्सल तक you can minus from the height और उतना आप Okay. सेट करोगे यहाँ. Okay. Okay. ओके. एंड निकेत, ये जो प्रोटोटाइप का ऑप्शन है ना, हाँ. यहाँ जाके we selected custom size and then we Okay. added this. ठीक है. And then we just mentioned the area which we are using with viewport. Yes, viewport, not the document size. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So Okay. now this will also help us design the rest of the sections. क्योंकि जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे, ठीक है, so मान लो यही हमारा दूसरा सेक्शन है, ठीक है. सो हमको पता होगा कि कितना एरिया व्यूएबल है, कितना नहीं है. दिख रहा है कि अब मेरे सेकंड सेक्शन में इतना पार्ट दिख रहा है, फिर ये इतना दिख रहा है, वैसे. सो इसलिए प्रोटोटाइप में इट इज वेरी क्रूशियल टू सेट द viewport height first. Is it clear? So to design something below the first fold, like we can place that banner or image or text anywhere, right? Keeping some distance below the button. Yes. Yes. Okay. So rest of the things, it is not mandatory to have everything in one fold, but normally what you prefer is, if you see Apple also, right, for that matter, they always prefer that a particular section should be visible in one fold, right? Okay. So that users can focus on one particular section. So if you see this, now I can see this entire section in one fold with the call to action and the price, right? Then when I scroll down, I see the second section in one fold, correct? Yeah. So it is a good experience overall. But you will also see some new websites like Pitch, where you won't see everything in one fold. So if you see this, right, you only see this traffic in the first fold, and then you get to see this, right? So Yeah. what the so first fold is something which is the first part of the website, or each section can be a first fold? No, 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 no. The very first section of the website is called as first fold. Okay. But when you scrolled in the Apple website, the second section is also coming accordingly, like in the viewport
area, right? We can see the whole section over there. Correct. That is supposed to be the case. But if you see here, right, what Yeah, smartly they have done is now they want the user to scroll. yeah, So if you focus on this button, correct, you yeah. will see this button until you are on this particular fold, and then the moment you scroll down, see it gets sticks here with that section. So this section is a longer section compared to viewport. Our viewport is this much only, Yeah. correct? But this image is going down, and then it gets sticks. See Okay. again this section also. So that is fine. But whatever is visible in your fold, it should make sense. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये बता रहे हो लेकिन इसका कोई सेंस ही नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, मैं कहाँ पर भी स्टॉप करूँ, यहाँ मैंने स्टॉप किया, एक्सप्लोर द फुल स्टोरी डायनामिक आइलैंड, सो दिस विल मेक मी स्क्रॉल, सो आई विल सी ओ डायनामिक आइलैंड ये रहा, है ना। फिर यहाँ पर मुझे टाइटल की जरूरत नहीं है, अगर यही मैं एक फोल्ड में अकोमोडेट करने जाता तो सब कुछ छोटा छोटा हो जाता ना। सो वी आर नॉट डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन और पीपीटी जो सब कुछ आपको एक ही फोल्ड में डालना है। सिर्फ फर्स्ट फोल्ड पे आपको ध्यान रखना है दैट यूजर को जो अटेंशन चाहिए वो मिल जाए, उसके बाद यू कैन प्ले अराउंड विद इट। हाँ, जब ऐसे कोई सेक्शन होते हैं कराउजल वाले, सो इट इज रिकमेंडेड कि वो एक ही फोल्ड में आ जाए, वरना अगर आपके हम्म, बटन नीचे जा रहा है या अगर ये आधा दिख रहा है तो कुछ सेंस हम्म। नहीं बनता इस सेक्शन में। बट ऐसे जो ओके, या सेक्शन, हाँ सो ऐसे, बॉक्सेस रहते हैं या क्रॉसल रहता है, करेक्ट उसके लिए वी हैव टू कीप द सेम हाइट विच वी हैव यूज्ड फॉर द फर्स्ट फोल्ड करेक्ट, फॉर द सेकंड सेक्शन एज वेल. यस। ओके. उसके बाद देखोगे तो फोल्ड का इतना वैल्यू नहीं है, हाँ, लेकिन उन्होंने जो छोटे छोटे सेक्शन बनाए हैं वो आपको एक फोल्ड में दिख जाते है ना। इसी दिस अभी एक अराउजल है दूसरा, सो इट इज इन वन फोल्ड ओनली। पर ये जो सेक्शन है जहां पर आप वर्टिकल स्क्रॉल कर रहे हो तो वो नीचे जा रहा है, सो इट इज फाइन। अब ये देखो यहाँ पर इतना ही दिख रहा है, नीचे के वैल्यूज नहीं दिख रहे, वो स्क्रॉल पे दिख रहा है, सो इट इज ओके, ठीक है। सो द प्रायोरिटी इज ऑलवेज the first fold, and then फिर depending on the section you take a call whether आपको उसको एक सेक्शन में फिट करना है कि नहीं करना है, एक फोल्ड में फिट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ओके. ठीक है, सो फोल्ड वाला पार्ट इज क्लियर। नाउ देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज। एक होता है लोफी वायर फ्रेम, जिस जो ये हमने बनाई है, यहाँ पर आप सिर्फ बॉक्स बॉक्स डाल देते हो, ठीक है, कि यहाँ पर ये सेक्शन आएगा, यहाँ पर ये सेक्शन आएगा, इसके बाद ये सेक्शन आएगा, and then you design the entire wireframe. As for the example, let me pull up one recent example. ये वाला, ठीक है। सो ये एक थीम है, ठीक है, उसको अगर मैंने वायरफ्रेम में कन्वर्ट किया, एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या होगा, yes, it is changed. ठीक है, no worries, but you see this is a sort of wireframe kind of a thing, जहाँ पर आप सिर्फ बॉक्सेस डाल देते हो, कुछ टाइटल्स डाल देते हो, है ना। फर्स्ट उससे भी चलो पहले लेट्स गो वन स्टेप बिहाइंड। व्हाट इज अ वायरफ्रेम? अ वायरफ्रेम इज नथिंग बट द स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। हमने ये वेबसाइट देखी, दिस इज अ फाइनल वेबसाइट, अप एंड रनिंग लाइव वेबसाइट, लेकिन अगर मुझे इसी की वायरफ्रेम बनानी है तो मैं क्या करूंगा, हम इसकी वायरफ्रेम बनाते हैं, चलो लेट्स सी, ठीक है। सो ऊपर एक मेरा हेलो बार है, ये जो पार्ट है ना जहाँ पर ये थोड़ा एडवर्टाइजमेंट किया है या जो भी कुछ हाईलाइट किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो बार, ठीक है। सो ये फर्स्ट है वो हेलो बार, उसके बाद ये मेनू आइटम है, ये हेडर है, तो हम क्या करेंगे, ये सबको हटाते हैं, चलो इसको नीचे रखते हैं, वी देन हैव द हेडर, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा डार्क करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये मैं लोफी वायरफ्रेम बना रहा हूँ अभी, हेडर, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया हेलो बार, ओके। अब इसके बाद क्या है, तो टाइटल है, तो ये रहा हमारा टाइटल,
जो ऑलरेडी था, ठीक है। उसके बाद सब टाइटल है, हमारा भी ये रहा सब टाइटल, ठीक है। देन देयर इज सम ग्राफिक आउट हियर, देयर इज सम ग्राफिक, so we also have some graphic, ठीक है। उसके बाद एक लाइन है विथ लिंक्स, तो हम क्या करेंगे, हम भी सिर्फ एक लाइन डालेंगे, ठीक है, विथ वन लिंक, हम सिर्फ एक ही लिंक डालेंगे, ठीक है। एंड देन वी अगेन हैव अ ग्राफिक, दिस एंटायर ग्राफिक which is comparatively bigger than the first one, तो हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है, इतना है। सो अगर मैं सिर्फ मेरा फर्स्ट फोल्ड और सेकंड फोल्ड देखूं तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। Now if I scroll down more, there is one more title, there is a carousel, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ ऐसे बॉक्सेस डालेंगे लोगों के लिए। So right now what we are doing is we are just replicating or understanding to what is the wireframe, low fee wireframe, हाँ, not high fee wireframe। तो ये ऐसा हमने सेक्शन बनाया, तो अब अगर हम इसको व्यू करें तो ये दिख रहा है, सिमिलर है। ऊपर एक हेलो बार है, सॉरी मेरी स्पेलिंग, ठीक है, ऊपर हेलो बार आ गया, फिर मेरा हेडर आ गया, ओके, एक टाइटल, सब टेक्स्ट, ग्राफिक, एक छोटा टाइटल, अगेन अ ग्राफिक, ठीक है। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि मेरा ग्राफिक थोड़ा बड़ा हो गया, फोल्ड में नहीं आ रहा है ना, इफ यू सी हियर, तो मेरे फोल्ड में नहीं आ रहा है ना ग्राफिक, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, सो दैट इट फिट्स इन वेल, ठीक है। सो नाउ दिस इज विजिबल इन अ फोल्ड, तो ये हो गया। उसके बाद टाइटल ये, so now here what we are doing is we are just creating the sections of the website in a low fee wireframe, okay। इतना तक क्लियर है सबको? Clear. यस निकेत, Yes. हर्ष, तूने वो जो स्क्वायर था वो प्रोपोर्शनली उसका विड्थ इंक्रीज किया ना? हाउ डू यू डू इट, लाइक प्रेसिंग शिफ्ट एंड इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द? हाँ, so अगर हम शिफ्ट दबा के ये करेंगे तो उसका हाइट विड्थ दोनों होगा। अगर मैं No, शिफ्ट, you increase just the width part for the about text box, above box, sorry. हाँ, इसको क्या करना है, You increased width proportionally, ओ लेफ्ट एंड राइट बोथ, left and right. Yeah. हाँ, How so do you do for that? that you need to press alt and then drag one of the side, Alt. yes, Okay. ठीक है। सो ये हमारे लो फी वायरफ्रेम्स हो गए, ठीक है, इतना तक सबको क्लियर है। अब जब हम वायरफ्रेम बनाते हैं, सो इससे डिफाइन क्या होता है कि जब हम क्लाइंट को शेयर करते हैं, I don't prefer sharing my low fee wireframes, or I, after 12 years of experience, I don't even create low fee wireframes, to be honest now. But if you want to practice or you want to just keep it to yourself, you want to brainstorm a little, you can do this on Sketch, or I mean rough Sketch, or you can also do this on Figma like we did right now. So what you get to know is that what all are the sections, what are the data points, what is the content bucket that we need to finalize on our website. Because so that is the major agenda of the wireframes. What would be the flow? What would be the journey? What would be the content bucket? Not the actual content. Okay, not the actual content, just the content bucket of it. So we try to define that in a particular page. So इसी तरीके से अभी ये तो हमने सिर्फ होम पेज का स्टार्ट किया है, इसी तरीके से वेबसाइट में जितने भी पेजेस होते हैं, so again going back to page, so we will create wireframe for this entire page, okay, including the footer. फिर उसके बाद we'll go to the product page, ये वाला introducing ये जो भी है,
फिर इसके बाद so now this is a blog page. If you see here, it's a blog page. So हम इसको for timing छोड़ देंगे. Then अच्छा ये वही page है, sorry. Then we go to what's new. So now this is a another page. है ना? What's new ये आ गया. So this is a separate page. फिर download a separate page. ठीक है. So जितने भी पेजेस है हमारी वेबसाइट में जो हमने इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में डिफाइन किए हैं वो सब हम यहाँ पे वायरफ्रेम में डिजाइन. ठीक है. सो आई एम श्योर कि आप सब अभी लैपटॉप या अपने सिस्टम से कनेक्टेड हो. सो राइट नाउ, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रेप्लिकेट दिस वेबसाइट pitch.com, ठीक है, एंड क्रिएट देयर वायरफ्रेम. And you have to create their wireframe. Don't try to copy the design. There is a difference. So if you watch closely, मैंने इनका जो बैकग्राउंड है मैंने उसका कोई मेंशन नहीं किया है वायरफ्रेम. ठीक है. अगर मुझे करना होता, so what I can do is I can simply add one more box in a different color just to say that there will be a background to this. ठीक है. मैं ऐसे कुछ करूँ. If I want to say that there will be a background. ठीक है. So boxes always define that there would be say graphics, there would be background, there would be some illustration, there would be images, etc. ठीक है. Header lofi मत बनाना. Header I would say you create this header only. जहाँ पे instead of so एक में थोड़ा हाई फाई वायरफ्रेम कैसे बनाते हैं वो भी मैं एक बार बता दूँ. ठीक है. हेलो बार को हम थोड़ा साइड पे रखते हैं और लेट्स टेक द टेक्स्ट. चलो ठीक है. ठीक है. ये आ गया. अभी हमारा लोगो है. तो हम क्या करेंगे, instead of saying adding the logo we'll just add pitch which is nothing but the logo. थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे. ठीक है. लोगो. तो उसके बाद we have the menu item. So menu item में हमारे पास है प्रोडक्ट्स. अब इसको इतना बड़ा नहीं रखेंगे. छोटा भी नहीं. keep it 18. ठीक है. we have products, we have presentations, we have templates, we have pricing, we have company, and we have jobs. ठीक है. अब if you look closely, so there are drop downs for product and company. So we will also add. So now there is a website that I usually prefer for wireframe icons. ठीक है. I at times use it for UI also, which is tabular icons. आपको बहुत सारे sources मिल जाएंगे icons के. The noun project, फिर free pick पे भी होते हैं icon. Then a lot of websites. उसकी मेरे को जो भी links हो गया I'll share it. ठीक है. So हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसका थोड़ा स्क्रॉल कम करते हैं. One and right and it's from 20. ठीक है. Anyways, so we'll just write down. So we'll get the down arrow. कहाँ पर है डाउन डाउन, ये रहा. ठीक है. एक थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है.
प्लस 24, create 24 pixel here. ठीक है. So now we'll just go here and place it. So now this exports as an SVG. So इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि SVG में आप SVG में आप उसका कलर चेंज कर सकते हो और उसका थोड़ा साइज वाइज चेंज कर सकते हो. PNG करोगे तो वो नहीं होता. So इसलिए I always prefer SVG icons, scalable vector graphics. So we now have the drop down. ठीक है. So और लास्ट में हमारे पास दो बटन है ऑफ लॉगिन एंड साइन अप. तो अब ये लॉगिन साइन अप जिसको फिग्मा और अच्छे से आता है, दे यूज ऑटो लेआउट. ठीक है. नहीं आता है अगर वो सब ऑटो लेआउट वगैरह, सिंपली क्रिएट टू बॉक्सेस इन द वायरफ्रेम, दैट इज कंप्लीटली फाइन. सो लॉगिन एंड साइन अप. ठीक है. यही चीज अगर मैं ऑटो लेआउट पे करता तो उसका फायदा ये होता कि मुझे बार बार बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. मान लो ये है, मैंने इसको ग्रुप किया, आई क्रिएट ऑटो लेआउट सेंटर. ठीक है. अब मैं इसको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, से फॉर एग्जांपल ब्लैक, और जो मेरा टेक्स्ट है उसको मैं देता हूँ व्हाइट. नाउ आई जस्ट नीड टू ऐड द पैडिंग. अब इसको पैडिंग किसको बोलते हैं? जो टेक्स्ट है उसके आजू बाजू की जो स्पेस है हम उसको पैडिंग बोलते हैं. ठीक है. ये वाली. तो हॉरिजॉन्टल पैडिंग इफ यू सी, तो 10 पिक्सल्स ऑन द लेफ्ट, 10 पिक्सल्स ऑन द राइट. हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं. एंड टॉप एंड बॉटम पैडिंग, तो 10 पिक्सल्स ऑन द टॉप और इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं. ठीक है. इट लुक्स लाइक अ बटन. फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 16. क्लियर. तो ये ऑटोमेटिक इसकी हाइट कम हो गई. सो विल अगेन इंक्रीज द हाइट. देन दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बटन इन ऑटो लेआउट. ठीक है. इसका फायदा यही है कि अगर मैं इसका टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ साइन अप, तो ये विड्थ अपने आप ले लेगा. यहाँ पर मुझे बॉक्स की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी. यहाँ पर वो बेस्ड ऑन द कंटेंट the width changes. Okay, so these are a few things that you can do using auto layout. But overall, are you following how do we do the wireframes? Why do we do the wireframes? Okay, so initially तो हम क्या करेंगे ना, that you have to simply practice the wireframe by replicating a website. ठीक है. एंड फिर जो हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज वी विल क्रिएट वायरफ्रेम फॉर आवर ट्रैवल वेबसाइट. जो हमारा जो प्रोजेक्ट है हम उसकी वायरफ्रेम बनाएंगे. ठीक है. खुद से, बिना देखे, बिना किसी का रेप्लिकेट किए. ठीक है. सो राइट नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू हैव 20 मिनट्स. ठीक है. सबको मिला के आपको इंडिविजुअली करना है. आपको ये वेबसाइट है pitch.com, आपको उसका होम पेज आप जितना बना सकते हो, लोफी या हाईफी जैसा भी, क्रिएटिव. ठीक है. यस निखिल, टेल मी. सो लोफी और हाईफी में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? मतलब ये देखो, अभी लोफी नॉर्मली. ये लिख दिया था, हेडर है. यहाँ पर ओके हेडर आएगा. ठीक है. ओके ओके. का सो वो नहीं. डिटेल्स एक्यूरेट होने चाहिए हाईफाई में. हाईफी में आपका फॉन्ट साइज वगैरह वो सब एक्यूरेट ना होना वो ठीक है, बट जो डेटा पॉइंट्स है, हाँ ये यहाँ पर अगर मेन्यू आइटम है तो मेन्यू में कौन सी चीजें आने वाली है, राइट हाँ. दैट डाउन. आपका अगर हेडलाइन है तो यहाँ पर एक्चुअल कंटेंट नहीं आएगा, दैट इज फाइन, लेकिन कितने साइज का कंटेंट आना चाहिए. तो हमने जैसे यहाँ पर एक विड्थ सेट कर दी कि इतना ही कंटेंट आना चाहिए, ओनली देन इट विल लुक गुड. ओके करेक्ट. सो वो हमको डिफाइन करना है. ठीक है. इन द वायर पे. ओके. सो ये सब हाईफी में कलर्स इंक्लूड नहीं करने रहते. दैट इज पार्ट ऑफ द यूआई. द एंटायर वायरफ्रेम शुड बी इन ग्रे स्केल. ओनली द लिंक्स व्हिच इज दिस. ऐसे कभी कोई लिंक्स आती है ना जहाँ पर आपको बताना पड़े कि ये क्लिकेबल है, हाँ तो आप सिर्फ ये ऐसा ब्लू कलर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है कि आप ब्लू कलर लिंक का होता है. या फिर आप इसको अंडरलाइन भी दे सकते हो, तो इट लुक्स क्लिकेबल, दैट्स इट. बाकी कोई कलर यूज नहीं करना है. कोई शेप्स और यूज नहीं करोगे वो भी ठीक है. ओके. या
सो जैसे अभी हाई फाई वायर फ्रेम में क्या हो सकता है, हमने यहाँ पर ये ठीक है, आप जो इमेजेस है ना उसके लिए बॉक्स ही यूज करोगे, उसके लिए कोई इमेज नहीं डालोगे। वायर फ्रेम में आप इमेजेस और ग्राफिक्स भी यूज नहीं करोगे, आइकन्स यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज आइकन्स। लेकिन अभी मान लो जैसे ये है, यहाँ पर लोगो है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ डमी लोगो उठा लोगे। ठीक है, तो आपको जैसे डमी लोगो ऑनलाइन उठा लोगे और आप वो वहां पर प्लेस करोगे, तो आपको पूरी एक लिस्ट भी मिल जाएगी। which you can simply place। वैसे तो वेबसाइट भी है जहां पर आपको डमी लोगो मिलते हैं, एंड देयर आर प्लगइन्स आल्सो ऑफ फिग्मा। तो यहाँ सबसे आप ऐसे डमी लोगो उठा सकते हैं, राइट। डमी लोगो, इफ यू राइट png you will get long list of it। यहाँ पर से है तो आप एक एक उठा सकते हो कॉपी इमेज करके, राइट। यस हनी। और सर फ्री वेबसाइट कोई है जहाँ से एसवीजी एंड इलस्ट्रेशंस मिल सकते हैं? उस पर हम बाद में आएंगे व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द यूआई। ओके। हाँ, आप ऐसे सब लोगोस यूज कर सकते हो, सिर्फ लोगोस यूज कर सकते हो। एंड मैं तो बोलूंगा आप इसको भी ग्रे स्केल कर दो तो ज्यादा बेटर है, राइट। ये सब सेम साइज से कर सकते हैं आप, 164 है तो इसको या 164 कर दो, तो सब एक जैसे दिखेंगे। जस्ट डिक्रीज द सैचुरेशन। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ कुछ जगह पे ये यूज कर सकते हो, बट नॉट दीज ग्राफिक्स। ये सब यूआई डिजाइन में होगा। क्लियर है, बैकग्राउंड क्या आएगा वो यूआई डिजाइन में होगा। सो अभी यू हैव 20 मिनट्स, 10 बजे तक, राइट। आप जितना इस होम पेज को बना सकते हो इन वायर फ्रेम, स्टार्ट डूइंग दैट। I would prefer that you do first the lofi for understanding। भले मेरे साथ शेयर मत करो, और सिर्फ शायद 20 मिनट में अगर आप ये सिर्फ लोफी बनाते हो तो भी ठीक है, बट डू समथिंग। आप जैसा जो आपको कंफर्टेबल लगे, इफ यू फील कि नहीं मैं हाई फाई भी बना सकता हूँ वायर फ्रेम या बना सकता हूँ, so please go ahead, I am fine with that। So you have 20 minutes to do, and your 20 minutes starts now exact at 10। share your screen one by one and then we'll see the progress। ठीक है, start। The artboard should be of desktop, right? yes, आपका जो भी डेस्कटॉप साइज है, आपको जो विजिबल दिख रहा है, टेक दैट विड्थ ओनली, एंड उसके हिसाब से आपका व्यू पोर्ट सेट करना। Okay, so my laptop is not listed. So हाँ, लैपटॉप लिस्ट नहीं होगा नो डाउट, बट वो रेजोल्यूशन तो पता होगा ना आपको, सो यू कैन क्रिएट योर ओन आर्टबोर्ड। okay. बट इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड, ठीक है, जब हम वायर फ्रेम या डिजाइन बनाते हैं, ऑलवेज डिजाइन ऑन द आर्टबोर्ड 1440 बाय विथ हाइट का ऑफ कोर्स लंबी होगी, बट 1440 की विड्थ में आप बनाओ। तो स्टार्ट डिजाइनिंग ऑन 1440। उसका रीजन ये है क्योंकि वो एक ऐसा रेजोल्यूशन है जो आप लैपटॉप पे देखोगे तो ठीक लगेगा, और अगर आप बड़े स्क्रीन पे भी देखोगे सो इट इज इजियर टू स्केल फ्रॉम दैट रेजोल्यूशन। ठीक है, सो डिजाइन फॉर 1440। Okay. यस विनीत बोलिए। हाँ विनीत बोलिए। डेस्कटॉप साइज आपने जो बोली वही चूज करते हैं। हाँ, वन 1440। फोर फोर जीरो 1024। हाँ, लेकिन उसका व्यू पोर्ट सेट कर दो। ओके।
Done, everyone? Yes, sir. Okay, so please share your screen and we can go through it. हाँ, प्रीव्यू में जाके पता ना। आर्ट मोड साइज क्या है? 1440. ओके, ठीक है। सो अभी अगर इसमें देखोगे इमीडिएटली तो फॉन्ट साइज बहुत बड़ी है ना? हाँ, डिस्क्रिप्शन है तो वहां पर उतना कंटेंट आता है डिस्क्रिप्शन का. If you see the wireframe that I created and what you have created, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. करेक्ट? सो डालना है ठीक है, बट मेक श्योर कि प्रोपोर्शन सेम रहे. जब पिच की वेबसाइट देख रहे थे तो इतना बड़ा हेडर था उसका? नहीं था ना इतना बड़ा हेडर. नहीं था. हाँ, तो फिर क्यों बनाया इतना बड़ा हेडर? सो अगेन उसके फर्स्ट फोल्ड में वो नीचे का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा था, हमारे इसमें नहीं दिख रहा है. एंड अगेन एज आई मेंशन, ग्राफिक ये जो लिखा है कैची लाइन स्टार्ट विथ एआई, उसकी जरूरत नहीं है. जस्ट कीप वन बॉक्स, दैट्स इट. ग्राफिक को डिफाइन करने मत जाओ यहाँ पर. ठीक है? स्क्रॉल साइजेस पे ध्यान देना. ठीक है, ये ठीक है. जाओ नीचे. अगेन ग्राफिक्स पे ध्यान मत दो. ये सब ग्राफिक्स का ऐड किया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है अभी. ये जो हाउ पिच वर्क्स है वो सब जो है वो पार्ट ऑफ ग्राफिक्स है. स्क्रॉल. ठीक है, ठीक है. निखिल. Yeah. Can you see the screen? Yes. Yeah, this is what I've created. No, we cannot see the Figma. We can only see your Chrome. Can you see the Figma? No. I think you shared only. Yeah. Now you can see? Yes. The viewport is not set. So if you see the height is very high. It's very Oh, powerful. I've set over here for custom. वो preview में जाके किया नहीं वो change. Correct. So that's why in the preview you see a bigger version. So click on show prototype setting. Correct. And here in the device you need to change to custom. Custom. Yes, perfect. This is better. ठीक है. Vinit, this is good.
Can you please share your screen? Yeah. Uh, So you have not joined from the system. Vinith, have you joined from system or Not my mobile meeting. I work on PC, joint system. okay? So just send me the link. I'll Okay. view it later. Yes. And I would request that you please join from system from next lecture onwards, so that Oh, it's easier for you to share the screen. Yeah. okay. Okay, sir. All right. Cool. So as an assignment, you guys have to work on the information architecture, and you have to complete the wireframe for the homepage of pitch.com. Okay. ठीक है. Okay. Okay, sir. Yeah, and mostly our next lecture will be on Sunday, not tomorrow, but on Sunday. So I'll update about the next lecture, but yes, you have your assignments to be done. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Also, I have one question. Like in Sorry? future, do AI will replace this UI UX job? No, it won't replace, but it will help us, in easing our process. So, for example, right now, if you are designing a travel website, so you can ask AI as to what all sections can I add on a travel website, correct? So instead of doing R&D, the AI will help you better. That what all sections can I have? They can provide you with some dummy content, right? That you can place in the wireframe. So all that can be done on the AI. So, but see, what happens is right now how we are creating wireframes, then we'll be moving to the UI. No AI tool can produce exactly same UI that you want, you know. And even if it does for one page, it is next to impossible that it will replicate for all the pages in a product, correct? So some basic pages like about us, team, career, all that is fine because that is standard. But when we talk about product, so product like pitch.com, where if you sign up and then you see the design of their product, right? All that cannot be generated by AI, but you can get help from AI in the research part. You can get the help from AI from the content, from the section part, correct? All that piece, but not the entire UI events, because that Okay. will always be custom. Hmm. Yeah, we need tell me. सर मैं एक लिंक्डइन पर पोर्टफोलियो देखा था. सॉरी, वेब हायरिंग पोस्ट देखी थी. उसमें लिखा था कि आप यूएक्स वर्क भी दिखाइए और यूआई वर्क्स भी दिखाइए. ऐसी रिक्वायरमेंट थी. तो मतलब यूएक्स वर्क्स और यूआई, व्हाट डिफरेंस? सो अभी जो हम कर रहे हैं वो यूएक्स कर रहे हैं, और इसके बाद जो हम करेंगे जहाँ पर कलर, फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी, इमेजेस, ग्राफिक्स, ग्रिड सिस्टम, वो सब जो होगा वो यूआई का काम होगा. सो दोनों अलग अलग है. तो जब हम वायर फ्रेम तक जो भी बनाते हैं दैट इज द यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस, और उसके बाद जो हम करेंगे दैट इज द यूआई. ओके सर. Okay? All right, so that's it for today. We'll meet in our next lecture and I'll update as to when we have the next lecture. Okay? Harsh, Okay, sir. the additional information architecture is you told me about mobile application, which is online shopping cart.
Yes, online shopping. Correct. Okay. All right. Cool. Thank you. Thank you Okay. so much, guys. Have a nice weekend. See you soon. You. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Bye bye. Thanks. Bye bye. Thank you.